everyone, welcome back to my channel. I'm Ankita and in today's video I'm gonna be showing you how to do this makeup look, which is my everyday makeup look, which I do under 15 minutes. And mine is this lip color. This is some bold lip color, but most of the times I like to go keep it nude. So yeah, if you are interested in this video, then please keep on watching. Also, before I forget, my earrings which I'm wearing are from Accessorize. This necklace is again from Accessorize and this top is from H&M. So let's get started with the video. सबसे पहले let's sort out this hair. So I'm taking this Innisfree का serum and मैं इसको अपने बालों में बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी लेंस में. एंड इसके बाद मैं लूँगी एक हीट प्रोटेक्टेंट मिस्ट जो मैंने ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल में डाल के रखा हुआ है एंड अपने बालों में अच्छे से मिस्ट करूँगी. अब मैं प्रोडक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोम करूँगी एंड दिस एलन ट्रूमन का हीट ब्लो ब्रश ले करके अपने बालों को स्ट्रेटन करूँगी सो दैट एक ब्लो आउट इफेक्ट मिले. एंड ये अच्छा भी लगता है, बिल्कुल पिन स्ट्रेट हेयर नहीं होते हैं बट अच्छा भी लगता है, मैनेजेबल हेयर लगते हैं ये. Now I'll put on some jewelry and then start with my makeup. सनस्क्रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है तो मैं इसको लगा के 10 मिनट्स का वेट करूँगी. देन मैं मेबेलिन का मास्टर प्राइमर अपने पूरे टी जोन पे एंड फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी. इसको लगाने के बाद आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई विल स्टार्ट विद माई मेकअप. सो आई एम टेकिंग दिस LA गर्ल का प्रो कंसील इन द शेड मीडियम बेज एंड ये मैं अपने अंडर आइज पे एंड अराउंड द माउथ जहाँ जहाँ मुझे डार्कनेस है वहाँ अप्लाई करूँगी. और भी जहाँ मुझे पिंपल के मार्क्स दिख रहे हैं मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इसको. एंड देन टेकिंग दिस ब्रश मैं अपने कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी. ये जो कंसीलर मैंने लिया है वो मेरे स्किन टोन का है तो ये हाइलाइटिंग शेड नहीं है. मुझे हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करना पसंद नहीं है डेली बेसिस पे, तो मैं अपने स्किन टोन का जो मैचिंग शेड है उसका लेकर के अप्लाई करूँगी. एंड आई एम ब्लेंडिंग द कंसीलर वेरी वेल. बहुत ही स्लो एंड टाइम लेकर के मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करूँगी. देन टेकिंग दिस इनफैलिबल प्रो मैट सेटिंग पाउडर मैं अपने फेस को अच्छे से सेट करूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे. इसको मैं कंसीलर ब्रश से ही अप्लाई करूँगी. देन टेकिंग दिस बिग फ्लफी ब्रश मैं अपने पूरे फेस को पाउडर डाउन करूँगी. नाउ आई एम अप्लाइंग Laneige का लिप स्लीपिंग मास्क ऑन माई लिप्स. देन टेकिंग दिस शुगर का फेस पैलेट एंड मैं ये ब्रॉन्ज़र वाला शेड पिकअप करके ब्रॉन्ज़र ब्रश से अपने पेरीमीटर्स ऑफ द फेस पे अप्लाई करूँगी टू गिव द वार्मथ बैक ऑन माई फेस. Now I'm taking this blush from Tarte Cosmetics and I will apply this blush on my cheeks and थोड़ा सा nose पे भी apply करूँगी to give that blushy glow on my face. Taking this rose in the air palette and taking this shade right here, I will pick it up on my crease brush and then blend it out on my crease. इससे मैं अपने eyes को define कर रही हूँ because basically concealer apply करने के बाद eyes बिल्कुल flat लगती हैं तो इससे आपकी eyes में एक depth, natural depth create होगी. Now I'm taking this Benefit का Goof Proof pencil and I will apply this on my eyebrows. Like I will fill my eyebrows in with this pencil. I'm making sure मैं अपने eyebrows को अच्छे से brush down कर रही हूँ. Then I will apply the product and disperse the product with using the spoolie on the other end of the product. Now I'm taking this NYX का brow mascara and इससे मैं अपने eyebrow hair को set करूँगी so that वो अपने place पे रहे and droopy ना लगे. Now I will take this K Beauty का काजल and I will tightline my upper lash line. Now taking this nude eyeliner, I will tightline my lower lash line to give my eyes a bigger effect. Now using this NYX Epic Ink Liner, I will draw a wing on my eyes. And now using Benefit's Roller Lash Eyeliner, I will fill the eyeliner in. Now using this Too Faced Better Than Sex Mascara, I am coating my upper and lower lashes.
Now using this PAC का micro finish makeup fixer, I will spray it across my face to set my makeup in place. Now coming to the lips, I will outline my lips using Maybelline का lip liner and मैं अपने lips को अच्छे से outline करके फिर उसको हल्का सा fill in भी करूँगी. Now using Faces Canada की liquid lipstick, I will fill my lips in. So this is the makeup look complete, and now I will tackle the hair situation. So firstly I'll open my hair जो कि हल्के से damp थे, and मैं again Alan Truman का hot brush लेकर के अपने बालों को अच्छे से blow out करूँगी so that एक अच्छा सा bouncy blow out effect मिले मेरे बालों को. Now I am adjusting the hair according to my liking, and this is the final makeup look. So this is how the makeup looks like in real life, and you can see all of my texture. My skin is absolutely not perfect, but yeah, I like to enhance what I got, and this is how the look turned out. So let me know in the comment section below how you like this makeup look, and what do you want to see next from my side, and I would love to make a new video for you guys, and I'll see you in my next video. Bye bye.